Have you all completed the test yourselves for the depreciation chapter? Yes. Chapter 7 done. Any doubts? Now, Ma'am, can you explain test and understanding 5? tell me the page number. Yeah, I think I found it. Okay. It's this one, right? Alberto bought a wood-burning oven for his pizza restaurant. Yes, ma'am. So 2000, okay, or 2010, जो भी है वो, he bought that oven, okay, and he assumed that the useful life would be 20 years. 3 years later, so after he charged depreciation for 3 years, he revises his estimation. He now feels that he will be able to use the oven for another 12 years. Okay, so 3 years के बाद technically life 17 years होनी चाहिए थी, but that has reduced to 12 years now. After which he will be able to sell it as on second hand for $1,500. Okay, what is the depreciation charge for the year ended 31st December 2003? बहुत ही simple question है. आपको क्या करना है? 2003 में क्या देखना है? Already some part of the asset has been charged to depreciation. Okay. In 2003 उसका वो जो oven था, उसका life reduce होके 12 years हो गया. But can we take that on 30,000, guys? Can we take it on 30,000? 30,000 was the initial cost. अच्छा, इसमें हमें ये मेहनत excuse me, इसमें हम लोग को ये मेहनत करने की जरूरत है क्या? Do we need to find the initial depreciation? Is it required? Do we need to waste our time with that? No. तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को 2003 में क्या हुआ वो देखना है. Okay. What is the remaining value of the asset with us? Can we find that? I'm waiting. First Jan 2000 he bought it for 30,000. Up till Jan 23, 2003. Okay, 20x3. Ma'am, we can find it using straight line. Correct. So we can find it. Yeah. How will we find it, Gargi? By using the formula. What is the formula? Actually, I had written, I forgot. It's okay. You can still open. Your book is in front of you. Test nahi hai ye. देख सकते हो आप लोग. Anyone else who would like to tell us? How can I find the depreciation charge that was calculated on 1st Jan 2000? पहले 1st Jan 2000 का करना है. Cost minus residual value divided by useful life. Correct. So what was the cost? 1st Jan 2000? It Cost was 30,000. 30,000? 30,000. Correct. Residual value दिया था क्या उस साल में? No. नहीं. तो residual value 0 divided by useful life कितनी लगी थी उसको? Alberto को 20 years. So 30,000 divided by 20 years अगर करेंगे तो 1,500 आता है. Each year he was supposed to charge 1,500 as depreciation. Okay? 3 years तक वो क्या करता रहा? यही करता रहा. 3 years तक he kept charging 1,500, 1,500, 1,500. कितना हो गया? 4,500. Okay? But 1st Jan 2003 he realized this is not going to go on for more 17 years. 12 years में asset खत्म हो जाएगा. Okay? So in that case, हमको सबसे पहले क्या करना है? We have to find the carrying amount on 1st Jan 2003.
How do we find carrying amount? What is the formula? Dhruv, what is the formula for the carrying amount? Carrying amount is also known as book value. book value. Correct. Book value कैसे ढूंढेंगे ध्रुव? Ma'am, cost minus accumulated depreciation. Very good. Cost minus accumulated depreciation. So 30,000 cost था. Accumulated depreciation 4,500. Yes. कैसे आया 4,500? 1,500 into 3 years. At the end of 2000, 2001, 2002, 3 साल हो गए. 4,500 minus किया. We got carrying amount of 25,500. With me, everybody. Ab. Now, when we calculate the depreciation for the next 12 years, we have to take 25,500 as the value of the asset, not the cost. क्योंकि cost में से हम already asset को depreciate कर चुके हैं to the extent of 4,500. That cost is no longer the carrying amount. Carrying amount has become 25,500. I all understand in this. अगर मैंने यहाँ पे 30,000 पकड़ लिया, मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ? You know what is going to happen? At the end of 12 years, I would have charged more depreciation than the cost of the asset itself. Are you all understanding why? $30,000 जो cost था at 1,2,000 था. Okay. I am revising my depreciation on 1st Jan 2003. Between 2000 to 2003 मैंने जितना depreciation charge कर दिया है उसको निकालो. अगर यहाँ आपने वापस revision 30,000 पे ले लिया, you will end up actually charging more depreciation than the cost of the asset. ऐसे हो सकता है कभी कि हम लोग cost से ज्यादा depreciation charge कर दें? समझाया था ना, we can never do that. We can only write up. In fact, we can write off till what value? Depreciation or accumulated depreciation can be written off only till dash amount. What is this? Dash. Fill in the blanks karo. Residual. Wrong. Depreciable. Depreciable value. यही हमने वो definition में देखा था. The allocation of depreciable amount. याद आया? तो depreciable amount क्या था? मैंने कुछ दिन समझाया था. It is not the cost. It is the total, cost of the asset, including acquisition, testing, etc., etc., minus residual value. Always remember to reduce the residual value. Okay? ठीक है? So, अब करें वो वापस formula apply करें. In 2003, the formula again will become carrying amount minus residual value divided by the useful life. What is the carrying amount? 25,500. I hope all of you all are making note of this. Do you want me to put it on the whiteboard? Neha, where were you the previous? No, not Neha. Chavi, where were you previous class, beta? Why did you have you seen the recording if you missed the class? You were not there, no, on Tuesday. Monday तो मैं भी नहीं आई थी. ये CA नहीं है, ये कैरिंग अमाउंट है. ओके, CA एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है वो. चलो, इसका क्या क्या फिगर्स है बताओ. CA is now 25,500 माइनस रेसिडुअल वैल्यू कितना दिया है? 1,500. करेक्ट.
बोला ना, at the end of 12 years he can sell it as second hand. Am I right, Parth? So that will be divided by what do I need to divide this by? 12. Correct. कितना आया आप depreciation बताओ? 2000. Is that the answer? Yes. So 2000 is per year. Okay, depreciation charge per year. Has everybody understood this now working? Yes, ma'am. किसका doubt था? Neha, was it your doubt? Ma'am, it was my doubt. Okay. Sakshi beta, you understood now? Yes, ma'am. Yes. Okay. तो अब समझ गया हम लोग कब जब भी रिवीजन होगा ना, प्लीज कैरिंग अमाउंट लेना, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे हमने 3 साल का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर दिया है. Done? Can I stop sharing the screen now? Any other doubts? नहीं, प्रोसीड करें आगे. अच्छा, इस बार काफी छुट्टी मिल गई इस वीक में आप लोग को. मैम एंजॉय किया सबने? कितने लोग मनी मन चाह रहे थे आज का क्लास भी कैंसिल हो जाए? नहीं? यस गार्गी. Ma'am, in test year understanding 2, why did we calculate the One second, Gargi, I can't hear you clearly. Your voice is coming in and going out. Come again. in can you hear me now, ma'am? Come Yeah. again. In test year understanding 2, why did we calculate depreciation for 3 consecutive years in for the minibus? Okay, so what had they asked us? Karen has been running successful nursery. Okay. Like literally little monkeys में कौन जाता है? कौन अपने बच्चे को little monkeys नाम की जगह पे भेजता है? Okay. New oven for nursery kitchen she had bought and a mini bus she had bought. Just 1 second. 1 second. Sorry about that. Started raining suddenly. Okay. Minibus, she has depreciated oven at 10% and minibus at 25% at RBM. Full year's depreciation is charged in the year of purchase, none in the year of disposal. What is the total depreciation charge for the year ended 31st October 2006? Okay. See, so for the oven that she bought for 2000 in December 4, okay, it was bought in which year? In look का year ending क्या है बेटा? 1st November to 31st October year है. Okay. Yeah. तो 1st December 2004 में जो लिया था, that was during the year 4-5.
Correct? That would have been the first year, yes or no? And then the next year was 5, 6, जिसका हमको calculate करना है. So it is the second year itself for the oven. Okay. Now oven ka they have said that 2000 was purchase cost and SLM 10%. So every year it will be fixed at $200. Correct? So we got the value for depreciation of the oven, $200 होएगा. हम लोग को वो देखना है क्या? कितने months का charge करना है and all that, not needed. ठीक है? In case of the minibus was bought in June 2004. It was bought before the oven. तो वो कौन से year में actually buy हुआ है? It was bought in 2003-4. Correct. So the first year for the bus was 3-4, then 4-5, and then 5-6. So we are finding the depreciation for the third year in case of the minibus. Everybody with me? Okay. So let's go back to our working space. ये तो हो गया for oven. $200. And how did we arrive at that? It was 2000 into 10%. Okay. Now let's calculate depreciation for mini bus. इसमें हम डायरेक्टली नहीं ले सकते ना, क्योंकि आरवीएम है. तो जब भी आरवीएम होता है हम लोग को पूरा टेबल बनाना पड़ता है. Correct? So what was the cost? What is the cost of the asset? $18,000. 18,000. ठीक है. फिर उसमें हम सबसे पहले depreciation for the year कौन सा कर रहे हैं? X3, X4, whatever it is. Okay. Because it was bought on what date? 1st June 2000. X4. X4, sorry. X4. ठीक है. तो 3-4 जब 31st August हमारा year end होएगा. Sorry, 31st October. X4. Does this make sense to everyone now? Okay. So it had to be at the rate of 25%. On what are we going to take this 25%? 18,000. Correct? कितना आएगा? बताओ 18,000 का 25% कितना होता है? मुझे लग रहा है 3,000 होएगा. 4,500. Yeah. क्यों 3,000 नहीं होएगा? Because we don't have to consider the period. Okay? उन लोग ने clearly लिखा है कि full year's charge on in the year of purchase and no year's charge on the year of sale, right? Correct? तो पूरा 4,500 लेना है. Good. कोई confuse नहीं हुआ. Good job. So carrying amount on 31st October कितना हो गया? 13,500. Correct. 13,500. Is this making sense for everybody? Okay, आगे बढ़े. Next कौन सा हम लोग को depreciation करना है? 2x15. Excellent. What will it be now? 25% will be taken on 13,500. Correct? 3,375. एक मिनट. अब ये माइनस कर दें. कितना आ रहा है कैरिंग अमाउंट? 7,875. Sorry, no. 10,125. करेक्ट. ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी. हम बच्चों ऐसे सिंपल नहीं होगा.
थोड़ा calculations करना पड़ेगा. Now finally we have arrived at the depreciation for 31st August. I don't keep saying August. 31st October X6. This is what they want us to calculate, no? For this year. कितना होगा 25% on 10125? 2531. Are you all rounding it off each time, no? Ma'am, it's 3375 and not 3275. Huh? It's 3375. 3275 नहीं है 33 है. Yes. Okay, but आप लोग ने 33 minus किया कि 32 किया? 33. Yeah, correct. 33 किया. Okay. So 2531 is the depreciation finally for the third year on the minibus. This is what we wanted. Okay. So 2531 plus 200. Total depreciation कितना हो गया? 2731. Charge. आंसर क्या दिया है? 2731. 2731 No, this is the है ना? answer. Yeah. Yeah, D is the answer. Now you all understood? Thank you, ma'am. No problem. So 3 years का पूरा ऐड नहीं करना है गार्गी. 3 years का हम लोग को इसके लिए चेक करना पड़ा because we wanted in RBM they wanted us to calculate the depreciation of the third year. Okay, so we in RBM we have to do it. There is no option. अच्छा, इसमें कैलसी पे फास्ट काम कर सकते हैं. सीखना है किसी को? इतना लिखने के जगह how we can do it on the calculator itself. Oh no. आता है सब लोग को? ये सीखा था 12th में 11th 12th में RBM how to do it only on the क्या? हाँ, तभी कैलकुलेटर्स किधर अलाउड था तुम लोग को? ऐसे कुछ भी फेकोलॉजी करने का टीचर के सामने? हाँ, चलो 18,000 correct is the cost of the minibus. We have to reduce it by 25% each time. So on the calci 18,000 डालो minus 25 दबाया, क्या आया? इक्वल टू किया. किन किन को 13,500 दिख रहा है कैलसी में? What did we do? 18,000 minus 25 and then press the percentage sign. Equal to दबाने की जरूरत पड़ी क्या किसी को? नहीं ना. For most of the people नहीं जरूरत पड़ती. In most of the calcies, in some calcies it's required. Can everybody see 13,500 on the screen? If yes, great. If no, please raise your hand. I'll tell you what you have to do. If you cannot see 13,500 on the display, so everybody can see it. बस यहीं पे वापस minus 25%. कर दिया? 10125 आया सबको? 1 minute. All right, guys. 10125 आया सब लोग को? बस now this year it has to change. 2 साल हो गए, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन ढूंढ रहा है. See if they ask you for the carrying amount. If they ask you for the carrying amount, then you do minus 25%. But is that the question? Have they asked that after the third year, what is the carrying amount of the asset? No, they have asked you to find the depreciation. So third year, you will change your calculation method.
हम सेकेंड ईयर के कैरिंग अमाउंट तक पहुंच गए. 10125 was the carrying amount on the end of the second of year 2. Here we have reached here at this point. Correct? So now what will you do for the third year if you want to find the depreciation? Don't press minus, press 10125 screen पे है, press multiplied by 25%. आपको आंसर सीधा आ जाएगा स्क्रीन पे of 2531. ओके, इसको मेमोरी में डाल दो, 2531 को मेमोरी में डाल दो. M प्लस किया सबने. And now calculate the depreciation on the oven. वो SLM है तो टेंशन नहीं है. 2000 into 10%. 2000 into 10% आया 200. डाल दो उसको भी M प्लस में और फिर मेमोरी रिकॉल करो MC. क्या आया स्क्रीन पे? आंसर आ गया 2731. सबको समझ गया? तो ये पूरा कैलकुलेशन हम लोग सिर्फ कैलकुलेटर पे भी कर सकते थे. तो मैंने क्यों लिखवाया? क्योंकि अभी प्रैक्टिस चालू है. Okay, so when you're practicing, better to write. Another thing I want to highlight, see, even in the exam, okay, you can do all this on the calculator, but make sure आप कुछ एक दो values अपने rough sheet में लिख दो, because when you rechecking के time पे आप लोग को शायद देखना पड़े कि तभी क्या किया था, in case you're getting a different answer. Are you all understanding this? So yes, everything can be done on the calculator, but if you're not writing anything, then when you're rechecking ना, आपको वापस पूरा solve करना पड़ेगा. इतना time शायद नहीं रहेगा. Rechecking means what you've done correct है कि नहीं. So just cross check की values जो आए थे तभी right आए थे कि नहीं. Okay? So थोड़ा एक दो values कहीं लिख देना paper पे with the question number. With the question number you should write the values so that you know कौन से question का क्या calculation था. Okay? Yeah, great. So everybody has, anybody wants to copy that calculation that we had done? Needed? Okay. So let's move ahead now. Shall we start our topic for today? Finally. All right, chalo. Accounts में किसी को problem नहीं हुआ ना? In making accounts. Now, in case of non-current assets, their disposal and revaluation, we had already done the part of disposal. What is disposal? When we are selling the asset, right? And this asset which was actually held for use, not for resale. Held for use होता तो वो कौन से accounting standard में चला जाता है? Come on, tell me which accounting standard for held for you, resale? बस बुक तभी खुलेगी जब भी मैम कुछ क्वेश्चन पूछेगी. Held for resale, which accounting standard is that? It is in inventory. It is inventory, of course, yes. Biggest difference, no, between inventory and any other asset held for use or held for resale. As far as goods are considered, investments की बात नहीं कर. Okay. Held for use or held for resale is also a very big condition to determine whether an asset is a current asset or a non-current asset. Okay, so if I'm going to buy something for resale, even if I hold it for more than 3 years, वो मेरा current asset ही रहेगा. क्योंकि मेरा motive क्या है उस चीज के साथ? use करना motive नहीं है, resell करना motive है. ओके, तो अगर मैंने किसी प्रॉपर्टी में, लैंड में कहीं इन्वेस्ट किया है अपने गांव में,
और मैंने सोच के रखा था कि ये मैं 3-4 साल के बाद जैसे वैल्यू बढ़ेगा बेच दूंगी. I cannot show this as my non-current asset. This is a very important condition. Okay. So held for resale is always a current asset. It cannot be classified as a non-current asset. समझ रहा है ये सबको? So it is one of the conditions. There were 4 conditions, if you all remember. We did it in the previous chapter, in the property, equipments and plant wala. Okay. All right, let's move on. So as far as non-current assets are considered, if at all they are ever sold, that's why I don't call it sale, we call it disposal. उसको sale इसीलिए नहीं बुलाते हैं. हमारा primary motive was not to sell it, to use it, and then when it has arrived at the end of its useful life, or when it is no longer in need or in use by us, हम उसको बेच देंगे. ठीक है, हम उसको निकाल देंगे, हम उसको dispose कर देंगे. That is why disposal. There's a difference in the word disposal and sale. Can't be treated as the same thing. Okay. So when the asset is disposed, chalo, come to page 142. Dhanshri, start reading from disposal of non-current asset. वहाँ पे एक छोटा paragraph है. IAS 16 says that the carrying amount of an item of property, plant and equipment shall be derecognized on disposal or when on future economic benefits are expected from its use or disposal. IAS 16 para 67. Stop. Wait. Okay. So they have very clearly said shall be derecognized. Carrying amount will be derecognized on disposal. Derecognize means उसको हमको write off करना है, निकालना है books में से. Okay. Only when the asset is being disposed or when, underline, highlight that part, no future economic benefits are expected. Okay. तो अब ये क्या हो गया? Asset totally out of use है, out of condition, and ये है, I am not expecting any future benefit from it. घर में बहुत चीजें होती है, हर कुछ हम लोग नहीं बेच पाते हैं ना, कुछ चीजें फेंकनी पड़ती है. तो जो चीजें हम फेंकते हैं क्यों? Because I don't have any more use for it or I can't see any future economic benefit from it, so I will throw it away. That is that second part of the definition. Okay. All right. So continue now. When a tangible. When a tangible non-current asset is disposed of, derecognized, there are a number of adjustments required to remove the asset and associated accumulated depreciation. Underline associated accumulated depreciation. सिर्फ asset नहीं निकालना है, उसका depreciation भी जो accumulate किया है वो भी निकालना है, right? From the statement of financial position and to record a profit or loss on the disposal. Correct. Okay. Now they are very easily explained. What have they explained? That if the proceeds means the money that you are receiving or the value that you are receiving in exchange for the asset. What are proceeds? They are sale proceeds. Money received in exchange for the asset. और money's worth received. मैं क्यों money's worth बोल रही हूँ? क्योंकि जरूरी नहीं हमें हमेशा पैसा ही मिलेगा. आप में से कितने लोगों ने देखा होगा? We may receive an asset. Okay. कितने लोगों ने, अगर if it's ever happened in with you at your home या around you, if you all have seen that पहले एक वो lady आती थी who used to take old clothes and give you a बर्तन in exchange for it. सुना है कभी या देखा है कभी? बहुत पहले होता था ऐसे. I think even now they go in these small areas and colonies. They'll be carrying and they'll keep saying, like, you know, they keep announcing something.
So they take old clothes and in exchange they give you a vessel. I think recycling at its best form, which we have forgotten as a generation. Recycling was so important and such a part of one's lifestyle back then. अभी हम लोग के कपड़े खराब हो जाते हैं, हम कचरे में डाल देते हैं, कोई यूज नहीं कर पाएगा. They go in dumps and they never ever get recycled. Okay, just adds to the garbage that we are putting out into the world. Okay, so recycling is very important. Yeah, so even when that was happening, पैसा exchange नहीं हो रहा था बिल्कुल भी. पुराने कपड़े जा रहे थे और एक new asset आ रहा था. That is why I keep saying it is in exchange for money or money is worth, which means that the exchange may not be in cash or check. It could also be in the form of another asset or any other tangible product. Okay, we are going to learn about that also today. Alright, so अभी तक हमने disposal सिर्फ cash और amount में देखा है, money में देखा है. इस बार हम money's worth में भी देखेंगे. Okay, alright. So we have to compare that sale proceed with carrying amount. Carrying amount कैसे ढूंढेंगे? Formula पता है. How will we find it in the books? Vishwanath, can we find the carrying amount in the books? What entries will we have to pass? For the asset disposal? Yes. To find the carrying amount of that asset. Will it be asset disposal account debit and asset account credit? And is that one entry enough to find carrying amount? अभी तक तो सिर्फ cost of asset आया है. Correct. If you have credited asset and brought it to the asset disposal account, so my asset disposal account now has the cost of the asset on the debit side. Yes. तो carrying amount तक कहाँ पहुंचे हम लोग? Carrying amount पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलो आंसर सब बहुत चुप है. हीरल, ध्रुवी, Sakshi, Hardik, what happened? Why so quiet? How will we arrive at the carrying amount? By subtracting non-current asset from accumulated depreciation. हाँ, तो how will I bring accumulated depreciation in my disposal account? एक और entry लगेगी ना, एक entry से नहीं होने वाला है. What is that second entry? What was step 2? चलो ये अकाउंट बनाया है हम लोग ने चैप्टर 1 या 2 में ही कर दिया था और एक्चुअली चैप्टर 3. Come on. Debit and credit disposal account. Excellent. Accumulated depreciation account को डेबिट करो, वहां से निकालो वो जो depreciation accumulate करके रखा है and bring it to the disposal account. Now in my disposal account, debit side is the cost of the asset, credit side is accumulated depreciation. तो net में मुझे carrying amount मिल गया ना account में. Okay. अब यहाँ मैं third entry pass करूंगी for the proceeds that I am receiving. Okay, and that is what they have compared, that if the proceeds is greater than the carrying amount, profit, proceeds is less than carrying amount, loss, and if proceeds is equal to, there's neither profit nor loss. Okay, so let's look at the account on the next page, page 143. They have given the journal entries as well as the account. Check it out.
Did you all try the TYU one? अच्छा ठीक है. You all haven't tried it right now. अच्छा, I thought I told you all. Okay, anyway. चलो अभी disposal through part exchange पे आ जाओ. Okay, next page. So here, sometimes an old asset is exchanged for a new asset, but very very important, कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्या? अगर पुरानी गाड़ी दी और नई गाड़ी ली, सेम प्राइस पे आएगा. कितनों आप में से कितनों ने अपना पुराना फोन देके न्यू फोन लिया है कभी? किया है ऑनलाइन ऑर्डर एंड इन एक्सचेंज फॉर द ओल्ड फोन? You all know 1000, 1500, 2000, 3000 depending on your model of the phone you get. What happens? कैसे मिलता है? You have to pay less, no, for the cost of the phone. Correct? Right? So in that case, what has happened to the cost of the new asset? It has reduced. But actual value क्या था उस new asset का? 15,000 का फोन आप खरीद रहे थे. 15,000 was the cost. You gave a old phone in exchange of the new phone and you got 2,000 rupees reduced. So you paid only 13,000. But actual cost कितना है वो asset का? 15,000. 15,000. तो books में कितना ही दिखना चाहिए as cost? 15,000 या 13,000? 15,000. 15,000 ही दिखना चाहिए, guys. 13,000 is what you are paying, but you are not giving only 13,000. You are giving 13,000 plus old phone. समझ रहे हैं? ये आप 13,000 पे कर रहे हो, बट उसके साथ आपका एक पुराना एसेट भी तो गया, ओल्ड फोन भी तो गया. तो बुक में द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट हैज टू बी शोन एट 15,000. ये गलती कभी मत करना कि जितना पे किया उतने पे ही रिकॉर्ड करेंगे. गलत कर रहे हो. कॉस्ट उसका 15,000 है. तुमने जो एसेट अपना पुराना दिया है वो भी तो दो. देखो, लुक एट द मनी इज वर्थ यू आर गेटिंग फॉर दैट एज वेल. Okay, so what are we going to do? Whenever there's a part exchange, an old asset is provided in part payment for a new one. Highlight that part payment. Old against new nahi hai. Old constitutes as a part of the total payment. Okay? कोई भी इतना दरिया दिल इंसान नहीं होने वाला है कि तुमको पुराने एसेट के जगह पे फुल न्यू एसेट दे दे with no additional amount to be paid. That's why it's part payment. Okay. Gargi, can you please mute yourself? Okay. Sorry, ma'am. No, it's okay. Balance of the new asset is being paid in cash. Okay. So the balance amount is paid in cash or bank or a credit, whatever it is. Okay. Now, what is the procedure? Step 1. Okay. Record the part exchange as proceeds. How will we record that? Look, sale proceed कौन से अकाउंट में जाता है? डिस्पोजल अकाउंट में जाता है, क्रेडिट होता है, तो वहां पे तो एंट्री जाएगी. बट इस बार डेबिट क्या होएगा? कैश डेबिट होएगा, बैंक डेबिट होएगा क्या? Are we receiving cash or bank for our old asset? No, we are receiving a new asset. So new asset account debit to disposal of old asset account credit. This is for the money's worth of the old asset. क्या amount आएगा उधर? The money's worth that you're getting for the old asset. ठीक है? तो 15,000 का फोन था, अगर ओल्ड एसेट देने से 13,000 हो गया, मतलब what am I getting money's worth for my old asset? It is the difference between 15,000 and 13,000. 2,000. You all might be thinking, मैम इतना क्यों समझा रही है? तो ऑब्वियस ही है. जब क्वेश्चन में ये लोग फ्रेम करके ये चीज डालते हैं, हमको तब वो ऑब्वियस नहीं लगता है. तब हमको लगता है अरे ओल्ड एसेट का कितना वैल्यू है. ओके, सो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ऑलराइट,
they won't directly give you the money's worth of the old asset. They will put it in the question in a way where you may have to find it. Okay. All right. So first entry is for recording the new asset in part exchange of the old asset. All right. Next. Look at what they have written and highlight that. It is the part of cost of new asset, which is also equal to the sale proceeds of the old asset. Don't get confused. Both of these are the same thing. Part of cost of new asset has to be equal to the sale proceeds of the old asset. दिख रहा है आप लोग को एंट्री नंबर 3 में? First two steps are the same. No difference in the first two steps. Old asset को disposal में लेके आओ, उसकी accumulated depreciation को भी disposal में ले आओ. Third step is changing now because we are not receiving money. Okay? We are receiving money's worth as part of the cost of the new asset. Guys, are you all understanding this? I don't know, today everybody seems very like इतने नींद में हो. तुम लोग क्या करते हो कॉलेज में रोज सुबह जाके? I think कॉलेज जाके सब नींद पूरी करते हैं. हाँ, या आज कुछ स्पेशल डे है? कल फ्राइडे नाइट पार्टी वार्टी की है बहुत? नहीं ना? पक्का ना? समझ में आ रहा है ना? ये इम्पोर्टेंट है. ओके, ठीक है. अब खत्म हुआ प्रोसेस? अभी तक खत्म नहीं हुआ. क्यों नहीं खत्म हुआ? एक एडिशनल एंट्री आ जाएगी यहाँ पे गाइस, which is to record the remaining part of the new asset. Okay, which will not come in disposal account, but you should know that. Okay, the remaining part of the new asset you're paying with cash. Correct? 13,000 rupees जो पे किया था, अब वो record कर दे. So that will be like any other purchase of asset entry, new asset account debit to cash or bank credit. This will not affect my disposal account. This is merely recording the new asset that we have bought and the money actually paid for it. Okay? तो जब वो फोन खरीदा, टोटल कॉस्ट 15,000 था, उसमें से 13,000 बाय क्रेडिट कार्ड पे किया और 2,000 का ओल्ड फोन दिया. दोनों रिकॉर्ड करोगे तो ही कॉस्ट 15,000 दिखेगा बुक्स में. If I only record the fourth entry, it will look like I have paid 13,000 and the cost of the asset is 13,000. इससे क्या प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में? अगर ये 2,000 वाली एंट्री हम भूल गए, थर्ड एंट्री अगर हम भूल गए, what will be the problem in the future? Come on, quickly tell me two problems associated with the error if we forget to pass the third entry. New asset debit, old asset credit, disposal of asset credit. Then we won't get the amount how much we have paid for. What is the difference and why is the difference? अरे तो ठीक है, वो नहीं मिलेगा तो सिर्फ क्या प्रॉब्लम होएगा बुक्स में? कॉन्सिक्वेंस क्या There है? will be an understatement of the depreciation amount, like the expense. हाँ, तो सबसे पहले तो there is understate. You have understated the asset itself. 15,000 के एसेट को 13,000 दिखाया है. ओके गाइज, अभी ना आप लोग डोंट जस्ट थिंक अबाउट अच्छा एंट्री क्या पास होएगी और यू नो क्या अकाउंट डेबिट क्या अकाउंट क्रेडिट. प्लीज widen your thinking and think about what are the consequences of incorrect accounting methods. Okay, आप लोग अभी जब जो ये ACCA कोर्स करे, आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि क्या एंट्री पास होनी चाहिए, बट अगर रॉन्ग एंट्री पास होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. So number one, you have understated an asset. If you have understated the asset today, future में your depreciation cost, depreciation will also be understated. Okay, so वो that is one consequence. Second consequence, asset side, new asset side आप लोग ने मुझे consequence बता दिया.
कौन सा अभी बाकी है कॉन्सिक्वेंस? 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व Ma'am, है ना वहाँ पे? income, the No. income. No, not income. Ma'am, the profit or loss. Very good. If I don't credit the disposal account with the sale proceed, the money is worth. अगर disposal account में मैंने वो 2000 नहीं डाला, या तो वो asset मेरे books में रह जाएगा, okay? और अगर मैंने asset को disposable में डाल भी दिया है, look here. I'm making the disposal account here of the old asset. Of course, old asset will only be disposed. Debit side पे हम लोग क्या लेके आए? Cost of asset लेके आए asset account से. Credit side पे हम लोग उसका क्या लेके आएंगे? Credit side पे disposal account में. Come on, answer जल्दी जल्दी. Accumulated depreciation. Accumulated depreciation. Excellent, good. See, keep talking, guys, because then I know you all are paying attention and you all are understanding also. Okay, so let's say the cost of your previous phone was 10,000 when you bought it. Okay, and the accumulated depreciation on it that you have charged is 8,000. Or let's make it 7,000. ठीक है? अभी तक 7,000 charge हो गया था. Now, if I don't record the 2,000 monies worth over here, to close this account, मुझे क्या दिख रहा है? How will I close this disposal account? Can I keep this disposal account open? No. No. How will I close the account, beta? साक्षी, कैसे बंद करूं ये account में? Loss on disposal 3,000. Excellent. ये loss Credit कहाँ पे side. जाएगा? Credit side पे Credit record side. होएगा और details में क्या लिखूंगी बेटा? Loss on disposal. P&L. Proceeds. Yeah. This loss will go to my P&L of 3,000. अब देखो, मैंने loss भेज दिया P&L में 3,000 का. Actually 3,000 loss था क्या? नहीं ना? नहीं था, because I got a new asset में part payment में I gave my old asset. Okay, so you see how much has the loss increased by? This is consequence number 2. Had I passed the correct entry where I was supposed to record this additional new asset. New asset में मुझे कितना कम मिल गया था? 2,000 कम मिल गया था for the old asset. फिर मेरा loss कितना दिखता बेटा? सिर्फ 1,000. 1,000. So what have I done? I have overstated my loss. So I've understated the asset plus I overstated the loss. Samjha how with that one entry your books of accounts, your financial statements are getting impacted. ठीक है, समझ गए आप लोग? तो थर्ड एंट्री इसके लिए इंपॉर्टेंट है और अगर वो एंट्री पास नहीं की तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. ओके, alright, they have shown that account again in the T format. As you can see that proceeds over there that they have written X is actually the reduction. वहां पे लिख दो आप लोग, reduction in cost और part of cost of new asset. ठीक है, जहां proceeds लिखा है. ये पार्ट एक्सचेंज वाला जो है ना, ये अच्छे से प्रैक्टिस करना. दे हैव गिवन यू अ कंप्लीट TYU2 where you have to make ledger accounts. Make sure when you come to class next time you do make those revaluation accounts. Okay,
अच्छा गाइस, आप लोग को आपके कॉलेज में पता है भी कभी कभी छुट्टी है? Monday and Tuesday. Monday, Tuesday for of course for Independence Day and for Parsi New Year, right? What about Gokulashtami? वो भी इसी वीक में आ रही है। No holiday, क्या ma'am. 19th को छुट्टी है? No, ma'am. Ma'am, we have Monday, Tuesday, Friday. हाँ, सी बिकॉज जो लोग भी दादर और टाउन साइड कॉलेज है, आप लोग कॉलेज जाओगे ही कैसे, राइट? बिकॉज दोज बिग प्रोसेशन स्टार्ट्स. Sorry, Gokul Ashtami, for you'll have those Dahi Handi ka processions and all, na? And this year there is no ban. सब लोग कर सकते हैं इस साल celebrate. Yes, Tanisha? We don't have a holiday, but You all don't have holiday, but okay. Thursday or Friday दोनों दिन नहीं है. Correct? Yes, ma'am. So I'm just checking what I have. Okay, so we'll have class on Monday, Tuesday, but Monday, 15th August is going to be online, okay, guys? Not offline, because the center is shut. So we'll take our class online. Tuesday, I will have offline class with me. And then Wednesday will be online again. And then Saturday, we'll do in the afternoon, but online. Okay? Ma'am, afternoon what time? Because morning I have college. 3:30, beta. Usual Okay. time on Saturday. Only this Saturday I kept it online in the morning because I was not available post lunch. Well, like after 12, I'm not available today. But next Okay, Saturday we'll meet afternoon, usual time. Okay. Okay, I was hoping to keep a class on Thursday actually. But आप लोग सुबह free नहीं हो ना Thursday को? No, ma'am. Okay, चलेगा. All right. Now, we are coming to an important part, and this is very new for you all. Disposal wala bhi new tha because abhi tak we were not used to pass the entry in such a way. Okay, but what we are doing today is hardcore concept right from the accounting standard, which is called revaluation of assets. Okay, so shall we start? Yeah, full concentration now. Next 30 minutes is very important. Okay, chalo साथ में ही read करते हैं. Vishwanath, please start reading from this is page 145. Because there are many small things, and for MCQs I want to be sure that you all have understood the entire concept properly. Okay, chalo. So far, the focus has been accounting for the cost of an item of property, plant and equipment, and the associated requirements to account for depreciation. According to IAS 16, items of property, plant and equipment can be measured and accounted for using the revaluation model. Some non-current assets, such as land and buildings, may rise in value over time. A company, rather than sole traders and partnerships, may choose to reflect the value of the asset in its statements of financial position. This is known as revaluing the asset. Okay, please stop. Now here, see, land, property, building, ghar, these kind of things. Saalo ke saal businesses use it. It's a very, very long-term asset. And you know what happens is, after 15-20 years, even if we depreciate it at a low amount, uska value girte rehta hai, carrying amount keeps falling. Okay, so even if we assume that this asset we are going to use for the next 30-35 years, वैल्यू कभी कभी बुक्स में इतना कम हो जाता है कि उस पे डेप्रिसिएशन भी आप ठीक से चार्ज नहीं कर पाते. ओके, इमेजिन करो टाटा स्टील इंडस्ट्रीज कितने कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ है? इट इज अ प्री इंडिपेंडेंस फैक्ट्री एंड कंपनी. उन्होंने उस टाइम पे क्या वैल्यू रिकॉर्ड किया होगा बुक्स में, और इतने साल से उसको डेप्रिशिएट भी किया है, तो उसका वैल्यू क्या दिखता होगा बुक्स में आज के डेट में? लिटरली पीनट्स. वो फैक्ट्री इज वर्थ पीनट्स और व्हाट? इज इट रियली वर्थ पीनट्स? नो. There has been a huge rise, in fact, because of inflation and other things.
प्रॉपर्टी वैल्यू तो बड़ा ही है, करेक्ट? So in such cases, we can't expect companies, especially companies, sole traders and partnerships don't get this privilege. Okay. So companies are allowed to revalue their asset, especially where the book value is very, very far from the fair value. वो fair value याद है? मैंने समझाया था fair value क्या होता है? It's like the market value of the asset. Okay, but उसमें थोड़े adjustments करने पड़ते हैं. So revaluation is about not just revaluing it to a lower amount, but revaluing the asset to the higher amount. जो आज तक हमें बोला गया था कि नहीं कर सकते. We cannot revalue the asset and bring it to the market price. Okay, but IAS 16 allows it only in case of कौन से assets आते हैं IAS 16 में? Property, plant, equipment. Which means you can't do it for everything. हर जगह ये अप्लाई नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है? क्लियर? This is only for those huge, big assets. Okay. All right. Can you continue, Tanisha? IAS 16 says that if an asset's carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase shall be recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. This will be covered later in the text. Okay, stop. तो बोल रहे हैं तुमको वैल्यू इंक्रीज करना है ना एसेट का, करो. एसेट का वैल्यू इंक्रीज करने के लिए हम लोग को एसेट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा. क्रेडिट किसको करेंगे? कैश बैंक को क्रेडिट कर सकते हैं क्या? आर वी एक्चुअली पेइंग मनी फॉर इट? नो, वी आर जस्ट ब्रिंगिंग द वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू ऑफ द एसेट टू मैच द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट. इट इज अ बुक एंट्री. बुक एंट्री मतलब सिर्फ बुक्स में उसको बढ़ाने के लिए हम एंट्री पास कर रहे हैं. तो ये अमाउंट जो हमने जिससे हमने एसेट बढ़ा दिया, बुक्स में एसेट दिख रहा है $10,000 पे, मुझे उसको बढ़ा के $80,000 करना है, तो मुझे कितना और ऐड करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ एसेट में? एसेट अकाउंट को कितने से डेबिट करना पड़ेगा? $70,000 से. दिस $70,000 आई विल शो इन अ सेपरेट अकाउंट एज इनकम, इन डबल कोटेशन एज इनकम. ये एक्चुअली इनकम नहीं है, मैंने ये कमाया नहीं है. Okay, and that is why even though I'm saying it is an income, it is shown as a revaluation surplus or revaluation reserve. Reserves and surplus याद है? हमने बैलेंस शीट देखी थी, उसमें ओनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड्स देखा था. उसमें कौन कौन से आइटम्स थे? सबसे पहला था शेयर कैपिटल इटसेल्फ. Share capital, everybody understands, is the capital that the business has. उसके immediately नीचे था reserves and surplus. So we will add this reserve to the value of the equity. क्योंकि obvious है ना, अगर कल business बंद हो गया और मैंने ये asset अगर बेच दिया, 10,000 का जो asset था, अगर मैंने अपने books में उसको revalue नहीं किया था, fair market value 80,000 है, I will sell it for 80,000. Book value was 10,000. वो जो extra 70,000 है वो profit ही है ना. वो profit किसके पास जाना चाहिए guys? किसका है ये profit? Proprietor. Now we won't use the term proprietor guys, because sole proprietors can't do this. It will go to the owners of the business, the shareholders. तो ये profit मैं अभी shareholders के reserve में दिखा देती हूँ ना. जब बेचेंगे तो आई हैव ऑलरेडी बुक्ड फॉर दिस प्रॉफिट कि उनका ही प्रॉफिट है. समझ रहा है अभी सब लोग को? सो आई विल शो इट एट द चेंज इन इक्विटी. आई विल एड इट टू द इक्विटी एज अ रीवैल्यूएशन सरप्लस और रिजर्व. सो दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. हाउ डू यू ट्रीट दिस इंक्रीज इन एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? ओके. When we go ahead, we will learn about where can this revaluation surplus be used. It cannot be used everywhere. Okay, उसका बहुत specific purpose के लिए use करते हैं. Okay, ठीक है. तो ये revaluation reserve के ऊपर तो हम लोग बहुत discuss करेंगे आगे जाकर. Yeah. All right. Hiral, continue reading.
This gain is not recorded in the statement of profit or loss because it is unrealized. हाईलाइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बच्चे गलती करते हैं. प्रॉफिट हुआ ना पीएनएल में डाल दो. हम लोग को आदत है डिस्पोजल ऑफ एसेट में भी प्रॉफिट हुआ पीएनएल में डाल दो. करेक्ट. बट ये पीएनएल में नहीं जा सकता है. दिस कैन नॉट गो टू एसओपीएल. दैट्स व्हाट दे हैव रिटन. इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल. ओके, कंटिन्यू. एक एग्जांपल दे. Shall I continue, ma'am? Yes. Yes, Hiral, you may continue. क्या हो गया इसको? Are you there? Okay, Hardik, please read. Continue from where she stopped. Think about owning a house. The value of the house may appreciate in value over time. You can't go out and spend that increase in value on a new car through because it is not a real gain to you. तो लोग क्या बोल रहे हैं कि घर की वैल्यू बढ़ गई. ठीक है, बट उस घर में आप रह रहे हो. अगर घर की वैल्यू बढ़ गई है, कैन आई गो एंड टेल द कार कंपनी अरे मेरे घर का वैल्यू कितना बढ़ गया है तो मुझे कार दे दो. Until I don't sell that house, until I don't get money from it, can I use that money to buy another asset? No. That is why we cannot record this as income in statement of profit and loss, because it is not a real gain. It is just a book entry of a probable gain in the future. Okay? Yeah, continue, Hardik. It only becomes real when you sell the house and receive the benefit from that sale. Until that point, it is hypothetical gain. Hypothetical gain. That is how much you would gain if you sold it at point in time. Don't forget the house could fall in value again by the time you sell it, leaving you to find other ways to fund that car you just agreed to buy. हाँ, so ये अभी इधर क्या बोल रहा है कि चलो आज ये वैल्यू बहुत बढ़ गई है तो हम लोग ने रीवैल्यू कर दिया, एसेट हायर अमाउंट पे दिखा दिया, बट इट इज पॉसिबल दैट इन द नेक्स्ट 10 years द वैल्यू कुड फॉल आल्सो. ओके, सो ये जो हाइपोथेटिकल गेन है, दिस मे नॉट रिमेन इन द बुक्स फॉर एवर. इट कैन रिड्यूस आल्सो फ्यूचर में जाके, और तब जब मुझे रिड्यूस करना होगा मैं यही रीवैल्यूएशन रिजर्व ही यूज करूंगी to reduce the value of the asset. Okay, तो ये बहुत common है guys. In fact, many businesses which have many properties, many equipments, कई बार ऐसे होता है कि थोड़े assets पे gain है but थोड़े assets पे revaluation loss है. बुक में ज्यादा अमाउंट दिख रहा है, एक्चुअली वो एसेट का उतना अमाउंट नहीं है, कम हो गया है अमाउंट. तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं सब रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दूंगी. ओके, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? All right. Please highlight that hypothetical gain word. It can come in MCQs. The gain arising from the revaluation of an asset. The gain arising from the revaluation of an asset is dash gain. Hypothetical gain, unreal gain, P&L gain, and a fourth option. So you all know what you'll have to choose, right? तो ऐसे एक एक लाइन पे भी वो लोग कुछ MCQ दे सकते हैं. Alright, Neha, continue reading. As this increase in value represents an unrealized gain, we cannot record it as a part of the profit earned during the year.
IS 1 requires that revaluation gains are disclosed separately from profit in other comprehensive income. This is covered in the latest. Okay. So please just highlight this last part that the revaluation gains are disclosed separately. Okay, when we get to that part in a future chapter, तो आप लोग इस पे मैं obviously I will stress. Okay. So disclose कैसे करना है ये चीज वो भी हमको बताए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमको कहाँ दिखाना चाहिए ये गेन. Okay. Alright. Now. They've given some illustrations over here. Let's come to illustration 2. So they've told us about a company which runs a kilt making business in Scotland. It has run for many years, okay, in a building which was originally costed at $300,000, on which $100,000 depreciation has already been charged. तो कैरिंग अमाउंट कितना है इस एसेट का बुक्स में? 200,000. 200,000, correct? Hamstring wishes to revalue the building to $750,000. देखा कैसे वो रिवैल्यू तो एंड अच्छा ये कोई भी अमाउंट पे हम रिवैल्यू कर सकते हैं क्या? जितना मना है चलो आज जितना दिखा नहीं राइट उसके लिए ना एक एक्चुअरियल और इसका प्रॉपर रिपोर्ट लगता है बहुत डॉक्यूमेंटेशन रहता है इसके लिए कि हाउ आर यू अराइविंग एट दैट $750,000 आपको एक्चुअली एक सर्टिफाइड इंजीनियर आर्किटेक्ट एक्चुअरियल से वो पूरा रिपोर्ट बनवा के लेना पड़ेगा उसके बाद ही आप बुक्स में कोई भी अमाउंट का हेर फेर कर सकते हो बिकॉज एनी एंट्री विच इज गोइंग इन द बुक्स नीड्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और एविडेंस so this report will be my evidence to change the value in the books तो ऑडिटर को ये सब चेक करना पड़ता है okay all right so look at what they have done look at the calculations below building cost accumulated depreciation दिखाया है the asset account needs to be raised by $450,000 to $750 building at cost building account में $300,000 पे दिख रहा है to make it $750,000 मुझे $450,000 add करना पड़ेगा ना okay so what entry are we going to pass look at that debit non-current asset building 450 debit accumulated depreciation अभी तक हमने उस बिल्डिंग पे $100,000 ऑलरेडी डेप्रिसिएट कर दिया था जब भी मैं एसेट रीवैल्यू करती हूँ मुझे उस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को वापस 0 पे सेट करना पड़ता है तो अब आज तक जितना भी आपने उस पे डेप्रिसिएशन किया बिकॉज आज की वैल्यू 750 है अगर मैंने सिर्फ कॉस्ट 750 से बढ़ा दिया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन राइट ऑफ नहीं किया तो कैरिंग अमाउंट कितना दिखेगा 750 माइनस 100,000 कैरिंग अमाउंट 650 दिखेगा ये तो रॉन्ग हो गया ना रीवैल्यू करके एसेट का बुक्स में भी वैल्यू 750 करना था समझ रहे सबको पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कॉस्ट 850 कर दूं कि 850 माइनस 100 भी तो 750 होता है मैडम ऐसे नहीं रिपोर्ट में 750 लिखा है ना तो एसेट का कॉस्ट कांट बी मोर देन 750 so what will I have to do I will have to set my accumulated depreciation back to 0 तो वो 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा accumulated depreciation account को क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा okay so look at the entry building $450,000 accumulated depreciation $100,000 and किसको क्रेडिट करेंगे P&L को नहीं कर सकते रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट एक नया अकाउंट बनेगा समझ गया बॉयज एंड गर्ल्स yeah okay they've made the asset account and the depreciation account एक बार on the next page please देख लो ये revaluation surplus को ऐसे ही बैलेंस रखना है हम लोग को
फर्स्ट 3 अकाउंट्स ही देखो, लास्ट का समरी वाला मत देखो, कंफ्यूज होएगा, वो मैं समझाऊंगी अभी। Miss, Yes, Miss, I have a doubt. yes बेटा। Miss, अभी building 3 lakh building original cost was 3 lakh, right? So it revalued at 7,50,000. So the actual gain was 4,50,000, right? So how did the gain come at 5,50,000? वही मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई, मुझे पता था ये डाउट रहेगा। This is the formula for revaluation surplus. Revaluation surplus is the difference in the cost of the asset. Difference in cost of asset कितना था ये एग्जाम्पल में? 750, which is the new value or the revalued value, okay, minus the cost of the asset और जो books में already दिख रहा है, which was 300,000, तो 450 आ गया। जो आपने मुझे बोला कि मैम गेन तो 450 का ही है, तो सरप्लस में क्यों 550 दिखाया? क्योंकि हम लोग को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी 0 करना था, उसका काउंटर भी रीसेट करना था। जब मैं एसेट रीवैल्यू करती हूँ, अगर आज, चलो आप लोग सब लोग मेरी बात सुनो, अगर आज मुझे पता चलता है मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ के 2 करोड़ हो गई है, मैंने ये लिया 1 करोड़ में था, तो आज से, आज के बाद अगर मैं अपने एसेट को रीवैल्यू कर रही हूँ तो मैं उस पर डेप्रिसिएशन करूंगी तो पूरे 2 करोड़ का करूंगी ना। अभी तक लास्ट 3 साल में मैंने या 4 साल में मैंने जितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी उस पर चार्ज कर दिया है, अगर मैंने उसके काउंटर को रीसेट नहीं किया तो मैं 2 करोड़ तक पहुंचूंगी ही नहीं ना। Are you all understanding this? If in my asset account बनाते हैं, asset account has been reset to 2 crores. कितने जीरोस होते हैं crores में? करेक्ट है, करेक्ट है। एसेट अकाउंट रीसेट कर दिया मैंने 2 crores पे, लेकिन मैंने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रीसेट नहीं किया उस पे। आज तक मैंने ऑलरेडी इन 4 years आई हैड ऑलरेडी चार्ज 10 lakh एज डेप्रिसिएशन। कैरिंग अमाउंट कितना दिख रहा है अब इस एसेट का मेरे बुक्स में? रिमेम्बर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग कैसे दिखाएंगे बेटा? एज ऑन करंट एसेट्स कैसे दिखाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? कौन से स्टेटमेंट में दिखाएंगे सबसे पहले? तो in which statement do we show the non-current assets? Statement of financial position. Good. ठीक है, as on the date I have revalued my asset. चलो, let's assume I revalued it on 31st July 22. ठीक है, नॉन करंट एसेट्स, उसमें हम लोग को कितनी कॉलम्स लगेंगे? नया क्या सीखा था हम लोग ने? हाउ मेनी कॉलम्स आर रिक्वायर्ड? लास्ट क्लास में सीखा था ना, डिस्क्लोजर ऑफ नॉन करंट एसेट्स। 3 columns. 3 columns. What are the headings of these 3 columns? Very good, Tanishq, बताओ। Cost. Correct. Cost, depreciation and Depreciation. Accumulated depreciation. depreciation. सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। accumulated depreciation and carrying amount. Good.
ठीक है, चलो अब आज के डेट पे मैंने रीवैल्यू किया तो मेरा प्रॉपर्टी कितना पे दिख रहा है, कॉस्ट कितना दिख रहा है, 2 crores। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने रीसेट किया ही नहीं, तो वो 10 लाख दिखेगा। कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, how much is the carrying amount? It is cost minus accumulated depreciation ना, 1 crore 90 हो गया, करेक्ट है कैरिंग अमाउंट, इज इट राइट? आज अगर मैंने आज के डेट पे रीवैल्यू किया था तो आज के डेट पे मेरा कैरिंग अमाउंट कितना दिखना चाहिए था बुक्स में, 2 crore दिखना चाहिए था ना। अभी से मैं फ्रेश काउंटर स्टार्ट करती थी ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, बट रॉन्ग दिख रहा है, कैरिंग अमाउंट 190 दिख रहा है। तो ये मिस्टेक होगी अगर मैंने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को रीसेट नहीं किया तो रीसेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, accumulated depreciation account has to be debited and that should be sent to revaluation surplus। और कितना भेजूंगी, आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया है पूरा का पूरा अमाउंट तुम लोग डेबिट कर दो। So accumulated depreciation is set to 0 now। अब फ्रेश स्टार्ट करो। तो रीवैल्यूएशन में ये डिफरेंस है, समझ रहे हैं आप लोग को? ये समझने का एक और इजी वे बताऊं। So this question can come, what is the revaluation surplus? Correct? Simple करें, एक और चीज ट्राई करें। There is one more formula। और revaluation surplus can either be calculated as the difference in the cost of the asset plus accumulated depreciation so far, or it can be calculated as what was the revalued amount minus the carrying amount on that day। ठीक है, ये मेथड से ट्राई करें एक बार, क्या आंसर आता है। रीवैल्यूड अमाउंट कितना है, हाउ मच डज ही वांट टू रीवैल्यू द एसेट टू? 2 crores। 2 crores। वो तो मेरे एग्जांपल में था, गो बैक टू द टेक्स्ट बुक जो मैंने ऊपर लिखा है। 4,50,000। रॉन्ग। व्हाट इज द रीवैल्यू? 750 है। Okay, 750,000। गॉट इट नाउ तनिष? yes। ठीक है, जो हमने यहाँ भी लिया था देखो, 750 माइनस 3 लाख किया था ना। yes। तो रीवैल्यूड अमाउंट इज 750। तनीषा, व्हाट वाज द कैरिंग अमाउंट ऑन दैट डे? व्हाट वाज द कैरिंग अमाउंट? एसेट कितने में था बुक्स पे, कॉस्ट कितना था एसेट का? It was 3 lakh। 3 lakhs। वो 3 लाख पे अभी तक डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो गया था? 1 lakh। So 1 lakh। So carrying amount was 2 lakh। 750 minus 2 lakh कितना आएगा? 4,50,000। 550,000। 550 ना, yes। ऊपर भी तो 550 आ रहा है आंसर, नीचे भी 550 आ रहा है, तो ही ये सेकंड वे हुआ ना ऑफ कैलकुलेटिंग इट। तो यहाँ पे मैंने accumulated depreciation ऐड किया क्या? Did I have to add accumulated depreciation here? No. Why? No. Because I considered the carrying amount, and carrying amount is after considering depreciation ना। Carrying amount का formula क्या होता है? Cost minus accumulated depreciation। So already accumulated depreciation मैंने I have already considered the accumulated depreciation। Okay, have you all understood this? The second formula, वही formula उन लोगों ने नीचे दिखाया है इन summary बोल के, चेक करो।
In the first formula, the values we are are not written like correctly because there is addition and we subtracted. What are you saying? In We have not written. revaluation, the first formula of revaluation surplus, we have to add the accumulated depreciation. And the Yeah. value is not the same. Gargi, can you use the values because I'm not understanding your question. Values is not the same, matlab. Meaning 750 minus Minus 3 lakh lakh is 4 is lakh. 450. 450 plus accumulated depreciation 1 lakh भी तो करना है. ये तो मैंने सिर्फ difference in cost of asset के नीचे दिखाया है. Sorry. Okay. If that's confusing you, let me add it. ठीक. अब ठीक है? That was just the calculation for the difference in the cost of the asset. Okay. So asset is at 3. We want to show it at 750. So difference in cost कितना हुआ? Difference in cost 450 हो गया. Okay. Plus the accumulated depreciation. 1 second. I don't know why Miss Varija is calling me. हाँ, अभी clear हो गया. There was some meeting ID related query that she wanted to ask. Okay, guys, we can think of winding up early if you all have understood, but we still have a little part left. अभी ये दो formulas समझ गए? So they can give you information in any way. You can use either of the formula to arrive at revaluation surplus. Finding revaluation surplus is going to be could be one of the prime questions. मतलब वो पूछेंगे वो लोग कि revaluation surplus कितना है. सब information देने के बाद बोलेंगे revaluation surplus में कितना जाना चाहिए. ठीक है? With me? Yes. हीरल तो लग रहा है सो रही है. पक्का नो? Alright. ठीक है. Then they have shared some illustrations with you all. You all can go through it. It's similar to what I have explained. All right, and they have shown the accounts. Now, the important part, in summary wala, the formula they gave, revalued amount minus carrying amount. Udhar aage likh do on the same day. It is on the day that you're revaluing it. Page 147 pe wo jo formula diya hai. Yes, any doubts? Any doubts, anyone? Okay. उसके that is where this section ends. Okay, उन लोगों ने ऐसे नीचे एकदम से next topic के बारे में बात किया. They have said for a non-depreciated asset. We know land is never depreciated. Correct? Land as an asset is never depreciated. So, अगर land कभी depreciate ही नहीं हुआ है, अगर मुझे land को revalue करना है, तो उसमें accumulated depreciation वाला part आएगा क्या? Accumulated depreciation is always 0 for land, no? Correct? तो इसके लिए वहां पे सिर्फ एंट्री चेंज हो जाएगी. नॉन करेंट एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट. accumulated depreciation होता ही नहीं है लैंड. ठीक है, तो वो एंट्री देखा कैसे चेंज हो गई. तो प्लीज 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 ध्यान में रखना कि अगर क्वेश्चन में उन लोग ने इक्विपमेंट लिखा है, लुक फॉर accumulated depreciation.
लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि बॉबी वांट्स टू रीवैल्यू लैंड और फिर उन लोगों ने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में बात ही नहीं किया, मुझे अगर आके एक भी इंसान ने बोला मैम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया था, नहीं रहेगा, लैंड है वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, तो तभी एंट्री सिंपल, नॉन करंट एसेट डेबिट करो, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट करो बाय द रीवैल्यूड अमाउंट, द डिफरेंस इन द कॉस्ट। आज तक लैंड मैंने $3,000 पे दिखाया था, अब लैंड का वैल्यू वो $750,000 हो गया, तो $450,000 का सिर्फ रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, यहाँ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। समझा? ओके, बट अगर it was a depreciable asset, then we use the formula that I already taught you. Okay, where accumulated depreciation will be debited, non-current asset will be debited with the difference, and revaluation surplus will be credited. Same चीज उन लोगों ने वापस लिखी है for no reason. It's the same thing that we already discussed on the next page. Can you all check that? Remember, revaluation surplus will be credited every time revaluation is occurring. Okay. All right. Now, asset revalue कर दिया. 31st July 2022. I have revalued my asset at 2 crores. How do I depreciate this asset in the future? Land है तो depreciate नहीं होएगा. Again. बिकॉज वो कभी डेप्रिशिएट नहीं होता है, लेकिन ये अगर प्लांट है, मशीनरी है, फैक्ट्री है तो डेप्रिशिएट होएगा. हाउ डू आई डेप्रिशिएट अ रीवैल्यूड एसेट? ओके, सो छवि स्टार्ट रीडिंग. Oh God, your mic is not working over. No. हाँ, it's working. चल जोर से थोड़ा. Page 148, Chavi. Note. Yeah. No, not the note. The depreciation on revalued asset. Yes. Are you with us? Yes. I have to read that. No. When a non-current asset has been revalued, the charge for depreciation should be based on the revalued amount. Underline based on revalued amount. And the remaining useful life of the asset. Underline remaining useful life. वो भी information बताएंगे. अगर 50 साल मुझे लगा था मैं यूज करूंगी when I bought the house, उसमें से 4 साल हो गए हैं और 4 साल के बाद मुझे लगता है 30 years के बाद मुझे चेंज करना ही पड़ेगा घर, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ या न्यू यूजफुल लाइफ जो है वो कंसिडर करना. ओके, after on the day of revaluation, say. Okay, continue. This charge will be high. This charge will be higher than depreciation prior to the revaluation and will be charged to the profit or loss as normal. Okay. IAS 16. 1 minute. So you need to stop after a point. I may have to explain it. So just wait. If I say continue. Obviously, अब revalue कर दिया asset. Value of asset बढ़ा कि नहीं? बढ़ा. तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बढ़ेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स बढ़ेगा. दिस हैज टू बी चार्ज लाइक अ नॉर्मल डेप्रिसिएशन, जैसे हम लोग नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. ओके, इफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रीवैल्यूड, द एंटायर क्लास ऑफ दैट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट in which that asset belongs will also be revalued. Obviously है, अगर मेरे पास 10 प्रॉपर्टीज थी उसमें से 3 रीवैल्यू हो गई है, ये सब बैठे तो एक ही अकाउंट में है ना. बिल्डर्स के होते हैं ना 10-10 जगह साइट्स चालू रहते हैं, तो 10 में से अगर 3 का रीवैल्यूएशन हुआ तो मेरे वो पूरे अकाउंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना. class of asset is same, right? Will I open a new account for every asset in the same class? No.
बिल्डिंग साइट नंबर 1 अकाउंट, बिल्डिंग साइट नंबर 2 नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। बिल्डिंग साइट में सारे जाएंगे ना 10 के 10, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली चीज स्टेट कर रहे हैं कि अगर एक आइटम भी चेंज हुआ तो पूरे का पूरा क्लास, पूरा वो अकाउंट का ही वैल्यू चेंज होएगा, विच इज ऑब्वियस। ओके, कंटिन्यू रीडिंग फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। IAS 16 permits a class of assets to be revalued on a rolling basis, provided that the valuations are kept up to date and that they are performed within a short period. So basically rolling basis means हर साल मैं revalue करती रहूंगी, every year I am revaluing it, but ये continuously करते रहना पड़ेगा। short period में लिखा है तो 1 year is that short period, okay, in my every year I'll have to revalue it, okay, continue. The excess of the new annual depreciation charge over the old depreciation charge may be the subject of an annual transfer from revaluation surplus to retained earnings within the equity section of the statement of financial positions as follows. Okay, stop. Now, जब हमें वो hypothetical gain, जब हमें वो unrealized gain हुआ था, when we had revalued the asset, हमने ये सब value profit उठा के कहाँ डाला था? रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाला था। अब जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी, when I charge depreciation, can I put the entire that huge amount of depreciation in my P&L? No, क्योंकि मैंने बुक एंट्री से अपना वैल्यू ऑफ एसेट बढ़ाया है, एक्चुअली पैसा खर्चा नहीं किया मैंने। वो जो 5,50,000 से I increased, when I brought my asset to $750,000, I increased the value with a book entry. I didn't actually pay it. Depreciation हम लोग क्यों P&L में डालते थे? क्योंकि जब asset खरीदा था P&L में कुछ डाला ही नहीं था, expense दिखाया ही नहीं था. So depreciation was our way of converting a capital expenditure into a revenue expenditure. Correct? But now I am not only converting capital to revenue, I did not spend any money. I've just increased the value of the asset in the books. So, जो वो extra charge है depreciation का, मैं directly P&L में नहीं डालूंगी, मैं उसको revaluation reserve में से, revaluation surplus में से debit करके निकालूंगी और retained earnings में credit कर दूंगी कि इतना पैसा free हो गया है. What are retained earnings? It is the profit remaining with the business after distribution of dividend. Net profit समझ लो. It is net profit which has been accumulated over a period of time. उसको retained earnings बोलते हैं. Correct? सालों के सालों मैंने प्रॉफिट कमाया है. अगर मैंने कुछ निकाला नहीं बिजनेस में से तो वो प्रॉफिट बिजनेस के पास ही है ना. That profit is called retained earnings. Okay? Have you all understood this entry? Please put a star on it. The next paragraph, I want everybody to read it for themselves. Let me know when all are done.
Have you all understood this? So what are they saying about this additional depreciation? That whether they want to remove it from the revaluation surplus or not, this is going to be the business entity's fault, the company's fault. If they do it, they have to do it every year. फिर तुम एक साल सडनली पीएनएल में नहीं मार सकते हो, पर आपको अगर नहीं करना है, ये ऑप्शनल है, नहीं करना है तो मत करो, पूरा का पूरा पीएनएल में डालो डेप्रिसिएशन. पर अगर ये अडॉप्ट कर लिया एक बार तो उसको तुम रिवर्स नहीं कर सकते हो, अब हर साल उसमें से ही निकालना पड़ेगा. Got it? Okay. So in the question they will tell you which policy the company has adopted. Whether they are adopting the policy where entire depreciation is going to the P&L or where the additional depreciation, additional means आज तक जो करते थे revaluation के बाद वो depreciation बढ़ जाएगा. So additional depreciation is the difference in the two depreciations before evaluation and after evaluation. वो एडिशनल डेप्रिसिएशन वो लोग रीवैल्यूएशन सरप्लस में से निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, वो कंपनी का चॉइस है. अगर एक बार कर दिया तो हमेशा करना पड़ेगा. ठीक है. तो ओल्ड डेप्रिसिएशन कंपेयर टू रीवैल्यूड डेप्रिसिएशन. ऑलराइट, नाउ up till here I want you all to read properly, go through each and every illustration, okay? And only then I will head into disposal of revalued asset, because if you all have not understood anything, you all have not understood it well till here, then disposal may problem hoegi. Okay? On Monday we'll finish this chapter and we'll start a new chapter. Once we finish the chapter, your next test, I think chapters are done. So then you all should also make sure use the weekend to prepare for your next test. Okay? वो कभी भी वो लोग next week में रख सकते हैं. Ma'am, when will you discuss the first test? Oh yeah, that is left, no? Monday करते हैं. Please remind me at the start of the class, so somehow रह जाता है. Chavi, have you given the test so far? आपने दे दिया first test? No, ma'am. When are you going to give it, beta? बहुत time हो गया. On Monday. How will you give it on Monday? Monday center बंद है. आपने पूछा है कि ऐसे मुझे Monday बोल रहे हो? No, I will ask Namrata ma'am. She told me that you can give it online. Okay. ठीक है, देख लो. We don't prefer students giving the test online. It's always better you all come and do it offline. Okay. So see, but keep me updated when you're doing it and what you're doing. Okay. Yes, ma'am. All right. Thank you. See you all on Monday. Yes. Ma'am, Monday afternoon class, no? 3:30. Yeah, afternoon में ही. Okay, ma'am. सुबह फ्लैग होइस्टिंग के लिए जाना, सब लोग अच्छे बच्चे बन के. ओके. ये नहीं कि छुट्टी है तो मैं 12 बजे तक सोऊंगा. कुछ तो शर्म करो. Okay. All right. Happy Independence Day in advance. See you all on Monday. Bye, ma'am. Any doubts?